मार्क करने होते हैं। सबसे पहले नो मोर देन 2 वर्ड्स, इंस्ट्रक्शंस को रीड करना बहुत जरूरी है। नो मोर देन 2 वर्ड्स का मतलब क्या होगा, या तो हमारा आंसर 1 वर्ड में आएगा, ठीक है, या हमारा आंसर आएगा 2 वर्ड्स में। इसके अलावा हमारा कोई आंसर नहीं आना चाहिए, पहली बात, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे कीवर्ड्स को मार्क। अब यहाँ पे क्या है, मैनी बिजनेस वैल्यूज कैन रिजल्ट इन डैश, जैसे हमने रीडिंग में किया था ना ब्लैंक्स, बिल्कुल सेम टू सेम वही टेक्निक हमने यहाँ पे यूज करनी होती है। यहाँ पे लिखा है कैन रिजल्ट इन, अब इन के साथ वाला इसमें भी वही चीज है कि इसका सिनोनिम बोलेगा, रिजल्ट इन का सिनोनिम बोलेगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सीनियर मैनेजर्स नीड टू अंडरस्टैंड एंड डील विद द पोटेंशियल डैश दैट मे रिजल्ट। पोटेंशियल कोई डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, कोई ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसा कोई इसमें वर्ड हो सकता है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे 31 32, पहले मैं इतनी रिकॉर्डिंग प्ले करूंगी, पहले आपने इतने क्वेश्चन ही करके मुझे माफी आपने बताने हैं इसके आंसर्स, ठीक है। रेडी, चलो आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। Now listen carefully and answer questions 31 to 40. In public discussion of business, we take certain values for granted. Today, I'm going to talk about 4 of them: collaboration, hard work, creativity, and excellence. Most people would say they're all good things. I'm going to suggest that's an oversimple view. The trouble with these values is that they're theoretical concepts, removed from the reality of day-to-day business. Pursue values by all means, but be prepared for what may happen as a result. They can actually cause damage, which is not at all the intention. Business leaders generally try to do the right thing, but all too often the right thing backfires if those leaders adopt values without understanding and managing the side effects that arise. The values can easily get in the way of what's actually intended. हाँ जी, 31 का आंसर डैमेज, डैमेज, राइट। 32 का आंसर बैकफायर, नो, 32 का आंसर आपका रॉन्ग है। अब यहाँ पे रिजल्ट इन लिखा हुआ है, ठीक है, और हमारे पास उसने बोला क्या था, रिकॉर्डिंग में क्या बोला था इसका सिनोनिम, रिजल्ट ही था, कॉज, रिजल्ट भी बोला था। इसका हाँ रिजल्ट ऊपर था, उसके बाद सेकंड लाइन में इसका जो लोकेशन थी, दे कैन एक्चुअली कॉज डैमेज। अब जो आंसर होता है ना उसको थोड़ा सा लंबा खींच के बोलता है, एंड जब एक आंसर वो फिनिश कर लेता है ना, इसके बाद छोटा सा पॉज भी लेता है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे वो शुरू करता है। अब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डैश दैट मे रिजल्ट, इसमें क्या बोला था, इफ दोज लीडर्स अडॉप्ट वैल्यूज विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द side effects that may result that arise, यहाँ पे आंसर आना था आपका साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स वाले बात की लैंग्वेज सारी आपकी सेम टू सेम मिल रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट मे रिजल्ट दैट अराइज, इसने बोला दैट अराइज, तो कीवर्ड्स का ध्यान रखो। इसके बाद है आपका नेक्स्ट हेडिंग कोलैबोरेशन। ड्यू टू ट्रेनिंग कोर्स द स्पीकर वॉज इन अ टीम that had to build a dash, क्या build करना था, that had to build a dash. Other teams experienced, क्या उन्होंने experience किया, dash from trying to collaborate, collaboration करते के समय उनको क्या experience हुआ जब वो collaborate करने का try कर रहे थे। The speakers team won because they reduced collaboration, ये भी लाइन सेम टू सेम ऐसे इसका सिनोनिम बोल सकता है। सेल्स ऑफ अ डैश, सेल्स किस चीज की, सेल्स ऑफ अ डैश, अब यहाँ पे अ का भी आपने ध्यान रखना है, ऑफ अ डैश वर पुअर बिकॉज ऑफ कोलैबोरेशन, किस चीज की सेल्स,
अच्छी नहीं थी कोलैबोरेशन के कारण। ठीक है, अब आपने 33 to 35 ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो, लिसन टू द ऑडियो वेरी वेरी केयरफुली। Okay, so the first value I'm going to discuss is collaboration. Let me give you an example. On a management training course I once attended, we were put into groups and had to construct a bridge across a stream using building blocks that we were given. The rule was that everyone in the team had to move at least one building block during the construction. This was intended to encourage teamwork. But it was really a job best done by one person. The other teams tried to collaborate on building the structure and descended into confusion, with everyone getting in each other's way. Our team leader solved the challenge brilliantly. She simply asked everyone in the team to move a piece a few centimetres to comply with the rule, and then let the person in the team with an aptitude for puzzles like this build it alone. We finished before any other team. My point is that the task wasn't really suited to team working, so why make it one? Teamwork can also lead to inconsistency, a common cause of poor sales. In the case of a smartphone that a certain company launched, one director wanted to target the business market, and another demanded it was aimed at consumers. The company wanted both directors to be involved, so gave the product a consumer-friendly name, but marketed it to companies. The result was that it met the needs of neither group. It would have been better to let one director or the other have his way, not both. 33 का आंसर बोलो। ब्रिज। ब्रिज, राइट। इसने बोला था हैड टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज, यहाँ पे क्या था, बिल्ड अ ब्रिज। मतलब अगेन यस सिनोनिम्स की बात आ गई सारी इसमें भी। ठीक है, यहाँ पे बिल्ड अ ब्रिज है, ऑडियो में क्या था, यस कंस्ट्रक्ट अ बिल्ड। और अ का अ बिल्कुल सेम था जो आर्टिकल्स थे, मैंने समझाया था प्रपोजिशन आर्टिकल्स आपको ज्यादातर सेम टू सेम मिल जाते हैं। यस यस। ठीक है जी, ओके। इसके बाद 34th का आंसर, अदर टीम एक्सपीरियंस्ड। स्ट्रक्चर और ट्राइंग स्ट्रक्चर। नो, अदर टीम एक्सपीरियंस्ड कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इसका आंसर था। लोकेशन में, ऑडियो में इसने बोला था टीम मेंबर्स डिसेंडेड इनटू कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन में चले गए। डिसेंडेड इसका यहाँ पे सिनोनिम यूज किया हुआ था, डिसेंडेड इनटू कंफ्यूजन। इसके बाद 35 का आंसर, sales of a dash स्मार्टफोन। to smartphones, right? Sales of a smartphone। अब यहाँ पे ना आंसर स्मार्टफोन है, आपने एस डाल के प्लूरल नहीं करना उसको, स्मार्टफोन का स्मार्टफोन ही हमने लिखना है, इस चीज का भी ध्यान में रखना। ओके। अब नेक्स्ट हमारा आ गया इंडस्ट्रियसनेस, मतलब इसका इंडस्ट्रियस होता है हार्ड वर्क करना, तो इसका सिनोनिम यहाँ पे बोलेगा, मे बी बोल सकता है हार्ड वर्क वगैरह कुछ ऐसा बोल सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड वर्क मे बी बैड बिकॉज, सॉरी, हार्ड वर्क मे बी अ बैड यूज ऑफ वेरियस कंपनी डैश। ठीक है, the word lazy in this context refers to people who avoid doing tasks that are dash। be lazy किस context में यूज किया गया है, उन लोगों के लिए यूज किया गया है जो काम, कौन सा काम करना अवॉइड करते हैं, who avoid doing tasks that are dash, ऐसे कौन से काम करना वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब ये अगले दो आंसर आपने करने हैं। आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो नाउ। Now, industriousness, or hard work. It's easy to mock people who say they work hard. After all, a hamster running around in a wheel is working hard and getting nowhere. Of course, hard work is valuable, but only when properly targeted. Otherwise, it wastes the resources that companies value most, time and energy, and that's bad for the organisation.
There's a management model that groups people according to 4 criteria: clever, hardworking, stupid, and lazy. Here, lazy means having a rational determination not to carry out unnecessary tasks. It doesn't mean trying to avoid work altogether. Most people display 2 of these characteristics, and the most valuable people are those who are both clever and lazy. They possess intellectual clarity and they don't rush into making decisions. They come up with solutions to save the time and energy spent by the stupid and hard-working group. Instead of throwing more man-hours at a problem, the clever and lazy group looks for a more effective solution. 36 का आंसर मैम पता ही नहीं चला क्या था. 36 का आंसर था, यहाँ पे बोला था हार्ड वर्क इज वैल्यूएबल बट ओनली व्हेन प्रॉपरली टारगेटेड, otherwise it wastes the resources that companies value most. It wastes the resources. Bad use, यहाँ पे लिखा हुआ है बैड यूज. रिसोर्सेज, इसका आंसर आना था रिसोर्सेज. यहाँ पे लिखा ना बैड यूज, लोकेशन में क्या था? Otherwise, it wastes the resources that companies most value. Next, the word lazy in the context people refers to people who avoid doing tasks that are, ऐसे कौन से task वो necessary जिनको नहीं करते? Here, lazy means having a rational determination not to carry out unnecessary tasks. यहाँ पे task लिखा हुआ था, who avoid doing tasks that are unnecessary. यहाँ पे आंसर आपका आना था unnecessary. ये मेरा यही था. ठीक है, तो मतलब आपका फोकस भी थोड़ा सा होना चाहिए अच्छे से ऑडियो के ऊपर. उसके बाद हमारा ये आपको नीचे वाले क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं. एक लाइन आई थिंक वो रेड लाइन के ऊपर आ रही है. ये कंपनीज दैट ऑलवेज दिख रही है तो ठीक है. ओके, इसमें अब लास्ट आपके पास 3 क्वेश्चंस है, वो आपने इकट्ठे अब एक साथ करने हैं. क्रिएटिविटी आ गया. एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर अ डैश, कैंपेन किस चीज के लिए ये आपने यहाँ पे बताना है. वॉज मेमोरेबल बट फेल्ड टू बूस्ट सेल्स, एक कैंपेन थी जो अच्छी गई लेकिन सेल्स को नहीं बढ़ा पाई. वो कैंपेन किसके लिए थी वो आपने बताना है. एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर अ डैश, किसी भी चीज का हो सकता है यहाँ पे नाम. इसमें क्रिएटिविटी शुड बी यूज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर डैश. भी क्रिएटिविटी हमने किस रिगार्ड में यूज हो सकती है. एक्सीलेंस, अकॉर्डिंग टू वन स्टडी ऑन एवरेज pioneers had a dash that was far higher than that of followers. तो इसका आंसर अब आपने बताना है. आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो. क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, रीड कर लो. Next, we come to creativity. This often works well. Creating an attention-grabbing TV commercial, for example, might lead to increased sales. But it isn't always a good thing. Some advertising campaigns are remembered for their creativity without having any effect on sales. This happened a few years ago with the launch of a chocolate bar. Subsequent research showed that plenty of consumers remembered the adverts, but had no idea what was being advertised. The trouble is that the creator derives pleasure from coming up with the idea and wrongly assumes the audience for the campaign will share that feeling. A company that brings out thousands of new products may seem more creative than a company that only has a few, but it may be too creative and make smaller profits. Creativity needs to be targeted to solve a problem that the company has identified. Just coming up with more and more novel products isn't necessarily a good thing. And finally, excellence.
We all know companies that claim they strive for excellence, but it takes a long time to achieve excellence. In business, being first with a product is more profitable than having the best product. A major study of company performance compared pioneers, that is, companies bringing out the first version of a particular product, with followers, the companies that copied and improved on that product. The study found that the pioneers commanded an average market share of 29%, while the followers achieved less than half that, only 13%, even though their product might have been better. Insisting on excellence in everything we do is time-consuming, wastes energy, and leads to losing out on opportunities. Sometimes second-rate work is more worthwhile than excellence. Make sure it's excellent sounds like a good approach to business, but the just get started approach is likely to be more successful. हाँ जी, 38 का आंसर, एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर अ creativity. कैंपेन फॉर यहाँ पे मैंने बताया था, कैंपेन फॉर अ किसकी ऐड करी थी, कोई चीज का नाम आना था यहाँ पे, किसकी ऐड करी थी उन्होंने जो लोगों को याद रही, लेकिन हाँ जी, Chocolate. चॉकलेट बार, इसका आंसर था चॉकलेट बार। ठीक है, इसके बाद क्रिएटिविटी शुड बी यूज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर डैश, पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इसका आंसर था प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इसने बोला था टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वन स्टडी ऑन एवरेज पायोनियर्स हैड अ Long time. मार्केट शेयर, इसका आंसर था मार्केट शेयर, कि जो मार्केट शेयर था उसका शेयर ज्यादा था, जो लोगों के पास था उससे ज्यादा कंपनी के पास मार्केट शेयर था। ठीक है जी, तो इसकी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, आपका ये जो है वीक है काफी, सेक्शन 4 माफी, इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बार बार सुन के इसकी प्रैक्टिस करो ऑडियो को, जब तक आपको आंसर क्लियरली समझ में नहीं आते, इसको बार बार सुनो, गैस वर्क करो, जैसे हमने यहाँ पे किया था टीएथ वाले क्वेश्चन में, गैस वर्क करो और उसको समझने की कोशिश करो। जो 40th वाला क्वेश्चन था इसमें कीवर्ड थे सारे, सिनोनिम्स थे सारे, इसमें बी शेयर बताया था, 13% शेयर था, बाकियों का शेयर कम था, मार्केट शेयर की बात करी हुई थी यहाँ पे।